चलिए, तो यहां पर देखे थे हम लोग, क्या था आपका एसी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी का हम लोग देख चुके थे। स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, एफ इक्वल टू एफ सी पर ये था ए सी बाई टू, और एफ इक्वल टू माइनस एफ सी पर था ए सी बाई टू, एफ इक्वल टू माइनस एफ सी पर। ठीक है, एक आ गया था आपका एफ सी प्लस एफ एम पे कितना, ए सी बीटा बाई फोर, और एक आ गया था आपका माइनस एफ सी माइनस एफ एम, माइनस एफ सी माइनस एफ एम पे ए सी बीटा बाई फोर। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट करोगे आप इसका ए सी बीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी, इसका क्या आ जाएगा सर आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये आ जाएगा आपका, जिसका करेंगे आप, ये क्या आ जाएगा ए सी बीटा बाई फोर डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एफ एम प्लस डेल ऑफ एफ माइनस, ओके, एफ सी प्लस एफ एम, तो ये क्या आ जाएगा आपका एफ सी माइनस एफ एम पे, और ये क्या आ जाएगा एफ प्लस एफ सी प्लस एफ एम, ओके, माइनस एफ एम, गॉट इट। ये आ गया आपका, मतलब एक आ जाएगा स्पेक्ट्रम आपका एफ सी, ये आ गया एफ सी प्लस एफ एम पे, ये आ गया एफ सी माइनस एफ एम पे। एफ सी माइनस एफ एम पे क्या आ जाएगा सर, एफ सी माइनस एफ एम पे क्या आ जाएगा ए सी बीटा बाई फोर, और अगेन यहाँ पर देखो माइनस एफ सी प्लस एफ एम पे कितना आ गया ए सी बीटा बाई फोर, गॉट इट। सो दिस इज योर स्पेक्ट्रम। इसको बोलते हैं हम लोग अपर साइड बैंड, इसको बोलेंगे हम लोअर साइड बैंड, इसको बोलेंगे हम लोअर साइड बैंड, इसको बोलेंगे हम अपर साइड बैंड। ये आपका जीरो फ्रीक्वेंसी था, गॉट इट। सो दिस इज योर सिंगल टर्न मॉड्यूलेशन प्रोसेस। Is it clear, my dear friends? Is it clear? Okay. So this is your spectrum. This is your spectrum. Okay. जिनका भी क्लास छूट जाएगा उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास से रिकॉर्ड करके मैं अपने सिस्टम में रख ले रहा हूँ। जिनको भी क्लास छूट जाएगा वो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सारे लेक्चर का रिकॉर्डिंग हो रहा है। दिस इज योर AC बीटा बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा सी। किसी को बोलेंगे हम अपर साइड बैंड, एक को बोलेंगे लोअर साइड बैंड, एंड दिस इज योर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। बैंडविड्थ क्या होगा ध्यान से देखिए, इसको बोलेंगे हम बैंडविड्थ। सो दिस इज योर FH हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, and this is your FL lowest cut of frequency. So what's the band of frequency? So the bandwidth is equal to FH minus FL, and this is FC plus FM minus of FC minus FM, that is twice of FM. So the bandwidth of AM signal is equal to twice of FM. Bandwidth of AM equal to twice of FM.
Got it, my dear friends? Is it clear? Twice of FM. My dear friends, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने साथी वालों सबको बता दीजिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं सर। जो भी क्लास छूटा है वो वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लें। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में रखा गया है, ठीक है। किन्हीं को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हैं, एंड क्लास कर ले सर। इसी तरह मैं सिग्नल में बोला था, सिग्नल बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया। कम्युनिकेशन ये बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है, बहुत ही धीरे धीरे अच्छे तरीके से एक एक स्पेक्ट्रम पढ़ाते चले जा रहा हूँ। चलिए अब देखिए ध्यान से, एएम सिग्नल क्या था सर आपका? एस एएम क्या था? एसी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस क्या निकाले थे अभी हम? एसी बीटा बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी प्लस एसी बीटा बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? ये क्या है? कैरियर सिग्नल है। दिस इज योर कैरियर सिग्नल एंड दिस इज कैरियर विथ मैसेज सिग्नल, साइड बैंड सिग्नल्स। तो कैरियर टोटल पावर मुझे निकालना हो तो टोटल पावर ऑफ एएम सिग्नल क्या बनेगा? कैरियर पावर प्लस टोटल साइड बैंड पावर, एंड टोटल साइड बैंड पावर मतलब क्या? अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड। So what is the carrier power actually? PC. PC is what? AC square by 2R. Actually what? Voltage square by resistance. Here we assume all cases are equal to 1 ohm. So PC is nothing but AC square by 2. Now here plus, so this is your what? Upper side band. This is minus, so this is lower side band. So what's the total? What's the upper side band power? Amplitude square by 2. So this is AC beta by 2 amplitude square divided by 2. Lower side band power sir, AC beta by 2 का whole square divided by 2. So this is your AC square beta square divided by 8. This is AC square beta square divided by 8. So this is your upper side band power and this is your lower side band power. Got it, my dear friends? Assume in all cases are equal to 1 ohm. So here I have assumed R equal to 1 ohm actually. So this is AC square beta square divided by 8 and this is AC square beta square by 8. So this is upper side band and lower side band. Now what's the total side band power? So total side band power is upper side band power plus lower side band power, and this is AC square beta square divided by 4. So the total power is carrier power plus total side band power, and this becomes AC square by 2 plus AC square beta square by 4. So the total power is AC square by 2 just common 1 plus beta square by 2, and you can write the PT equal to PC 1 plus beta square by 2. PT equal to PC 1 plus beta square by 2, and this is called total power. Beta is what? AM by AC. This is called modulation index. So beta is called modulation index AM by AC of the AM signals. Is it clear, my dear friends? So beta is AM by AC. So it is the very important formula. ये बहुत ही important formula याद रखिएगा आपका.
Okay, this is beta. What's Gaurav? What is the M? M I call modulation index. Modulation index. And its formula is AM by AC. What represent the modulation index? Okay. So modulation index होता क्या है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं हम लोग. What is the modulation index? देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है आपका कि व्हाट कंटेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड. सो जस्ट राइट डाउन व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. राइट डाउन व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. या इसी को बोलते हैं हम डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन. This is beta, this is AM by AC. Just write down. The physical significance of depth of modulation. The physical significance of depth of modulation is the content of message signal that is stored in the carrier signal. Is called depth of modulation. If beta is less than 1, this is called under modulation. If beta is equal to 1, this is called critical modulation. If beta greater than 1, this is called over modulation. Got it? Now come to the point next, modulation efficiency. Modulation efficiency. Write down modulation efficiency. Okay, it is the ratio of total sideband power to the total power. So this is AC square beta square by 4 divided by AC square by 2, 1 plus beta square by 2. This is cancel out. So efficiency becomes beta square upon 2 plus beta square. That is, this can be useful power upon total power. This is called modulation efficiency. Now what will happen actually when beta is less than 1, that is AM by AC is less than 1, and this is called what? Under modulation. This is called under modulations. Okay, so in this case AM will be what? Less than AC. Now envelope will be distorted. In what way envelope will be distorted? I will explain further. If beta equal to 1, it means what?
the message signal amplitude is must be equal to carrier signal amplitude. If beta greater than 1, it means AM is what? Greater than AC. So this is called over modulations. Okay. Now in these three types of the modulation process, generally we use either under modulation or critical modulations, not the over modulations. Why? I will discuss further why we not use the over modulation case. Because there is a envelope distortions, there is a overlapping of the envelope in the case of over modulations. That's why we prefer for the under modulation and your critical modulations. Now, what should be the beta value? Beta should be always greater than equal to 1. Maximum value of beta is what? 1. Okay, if greater than 1, this is the case of over modulations. So for maximum value of beta is equal to 1. So when you put this maximum value 1, then what's the maximum efficiency? Maximum efficiency becomes 1 by 3 into 100. This is 33.33%, which is very low efficiency. Which is very low efficiency. Which is very low efficiency. Okay, my dear friends, is it clear? So efficiency is what? Very low efficiency. Very low efficiency. Efficiency is very low. So this is the biggest demerit of your AM signals. Yes, yes, envelope. I will discuss, Gaurav. Don't worry. I will discuss. Don't worry, Vivek, Gaurav. Okay. Just write one question. Just write down. For an AM signal, total sideband power is given by 100 watt. Total sideband power is given by 100 watt. With 50% of modulation efficiency. With 50% of modulation. मॉड्यूलेशन मतलब आपको बीटा दिया हुआ है कितना 0.5 50% 0.5 दिया बीटा फाइंड टोटल ट्रांसमिटेड पावर पीटी टोटल ट्रांसमिटेड पावर total sideband power is what AC square beta square by 4. This can be right here AC square by 2 into beta square by 2. This can be right here PC into beta square by 2. So what's the total power? Hundred equal to what? PC beta square by 2. So this is 0.5 square divided by 2. So total power is what? PC plus total sideband power. PC यहाँ से निकाल लीजिए
1/4. This is 800. PC is what? 800 watt. Total sideband power given 100 watt. Answer is 900 watt. Is it clear? Answer is what? 900 watt. So this is called singleton modulations. Okay. Now, multi-ton modulations. लिखिए. In the multi-ton modulations, the message signals having the more than one frequency component. More than one frequency component. So the general equation AM equal to this AC into 1 plus beta 1 cos of omega m1t, beta 2 cos of omega m2t, plus beta n cos of omega m and t into cos of omega ct. This can be right here AC into 1 plus beta t cos of omega n t into cos of omega ct, where beta t equal to under root beta 1 square, beta 2 square plus beta n square, where beta 1 is called AM1 by AC. Beta 2 is called what? AM2 by AC. Beta n equal to what? AMN by AC. Got it, my dear friends? Is it clear? Is it clear, sir? This is called multi-ton modulation. Why? Because here more than one frequency is used. That's why this is called multi-ton modulations. Is it clear, my dear friends? Okay, so only change in the beta t. That is called modulation index. All formula will be same. Each and everything will be same as that of singleton modulations. Only change in beta. So what will be the total power? PC 1 plus beta t square by 2. Bandwidth is what? Twice of F maximum frequency. Twice of F maximum. मल्टी-टर्म मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या है? इफ मोर देन वन फ्रीक्वेंसी है ना, लिख लीजिए. इन द मल्टी-टर्म मॉड्यूलेशन more than one frequency components are used for the modulation process. That is called multi-turn modulations. What's the efficiency? Everything will be same. Only change the beta t.
This is your percentage of efficiency. Got it? Write one question. Let the question is AC equal to 10 cos 8 pi into 10 raised to power 5t is amplitude modulated signal m of t equal to 6 cos pi into 10 raised to power 4t. Find all parameters of AM. All parameters of AM मतलब efficiency, bandwidth, okay, total power, total sideband power, carrier power. चलिए बनाइए. ये एसी हो गया. ये क्या हो गया आपका AM हो गया. यहां से आप FM निकाल लीजिए. यहां से आप क्या निकाल लेंगे FC निकाल लेंगे. Is it clear, sir? What is the beta? Modulation index AM by AC. This is 6 by 10. This is 0.6. What is the efficiency? 0.6 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.6 का स्क्वायर निकाल लेना आप जो आएगा आंसर. What's the bandwidth? Twice of FM. FM is what? 2 pi FM equal to pi into 10 raised to power 4. So this is pi cancel. Twice of FM is what? 10 raised to power 4 hertz. This is 10 kilohertz. This is the bandwidth. What's the carrier power? PC. AC square by 2. So this is 10 square by 2 and this is 50 watt. Okay. So what's the total sideband power? PC into beta square by 2. This is 50 into beta square. 1 by 2 into beta square is 0.36. So this is your 25 or 0.1, 18 this is 9 watt. Okay. So what's the total power? PC plus total sideband power, and this is equal to 59 watt. Got it, my dear friends? Is it clear? Please write each and every one. Clear or not? क्लियर. चलिए बहुत अच्छा. चलो आज इतने रखते हैं हम लोग. कल का टाइमिंग जो है 3:30 बजे रहेगी आपकी. 3:30 शाम में रख सकता हूँ क्या, या मॉर्निंग में आप लोग? मॉर्निंग नहीं यार, छोड़ दो. शाम में. शाम में अगर 6 बजे से रखा जाए, 6:30 बजे से. या यही टाइम 3:30 बजे ही रहने दो.
चलो ठीक है, 3:30 रहने देता हूँ, छोड़ो छोड़ो, 3:30 सही है यार, वही टाइम हम लोग को सुटेबल था, वही ठीक है 3:30। अपने दोस्तों को थोड़ा सा यार मैसेज करो, थोड़ा कॉपरेट करो यार अपने दोस्तों को थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर। हाँ 3:30 ठीक है। एंड जिनका पेमेंट नहीं आया प्लीज पेमेंट कर दें, ठीक है ना। और इसमें जो है ज्यादा मैं छूट नहीं दूंगा, चाहे एक बच्चे का भी रहेगा पेमेंट तो मैं उसको फुल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टफेस्ट सब्जेक्ट है, फ्री पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सिग्नल में बहुत कुछ फ्री पढ़ा भी दिया था, बट कम्युनिकेशन में फ्री नहीं पढ़ाऊंगा दोस्त, बुरा मानिए या सही मानिए, क्योंकि बहुत टाइम देना पड़ता है ना, और फ्री का वैल्यू नहीं समझते हैं लोग। फ्री पढ़ा भी दूं लेकिन फ्री का वैल्यू नहीं समझते हैं। नाम नहीं लूंगा, एक स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट फ्री पढ़ लिया, एक भी पैसा नहीं दिया पेमेंट, है ना, बोलता रहा सर आज देता हूँ कल देता हूँ, उसको मांगने में भी ठीक नहीं लगता है सब चीजें, है ना, खुद की समझदारी होनी चाहिए। 2-3 स्टूडेंट मैं भी पढ़ा दे रहा हूँ, आप सोच लो, है ना, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं पढ़ा दूं अच्छे तरीके से, तो आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा ज्यादा, एंड ज्यादा ज्यादा मुझे कॉपरेट कीजिए सर, ताकि मैं आपको बेहतर देख सकूं। कैसा आज का पहला क्लास था, मजा आया, क्लियर है सबको? थैंक यू, थैंक्स मानिक। चलिए चलिए, बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग 3:30। बुक बुक देखो, मैं सॉम्स आउटलाइंस की बुक अपने पास रखना, सिर्फ सॉम्स आउटलाइंस की बुक मैं शेयर कर दूंगा, यही बुक रखना है आपको। दूसरा आपके पास बुक जो है आप रख सकते हैं साइमन हाइकिन, साइमन हाइकिन का बुक रख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों बुक। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग 3:30, 3:30 में कल मिलते हैं। हाँ बोलो, बोलो गौरव। ठीक है, रखें। सिग्नल्स की न्यूमेरिकल के लिए कोई बुक, वही सॉम्स आउटलाइंस की बुक जो है सिग्नल के लिए, ठीक है, ग्रुप में आपको शेयर कर देगा विवेक। चलो बाय बाय, टेक केयर।